the student. Today we will discuss about our chapter environment. Environment means the surrounding and the countless natural forces causing a variety of phenomena on the surface due to which there is a variation in the environment of each place. Thus, the relationship of man with his surrounding is not the same anyway. Environment means our surrounding or the our surface the countless natural forces जिन्हां दे कारण साडे environment change आउंदी है. It is due to difference of relief, temperature and rainfall that there is a difference in vegetation and agriculture. कहंदे environment ਵਿੱਚ change साडी geographical conditions ਤੇ temperature ਦੇ ਕਾਰਨ rainfall ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡੀ vegetation and agriculture ਵਿੱਚ ਵੀ काफ़ी difference देखने ਨੂੰ मिलता है. साडा environment इसलिए कह सकते हैं कि environment हर जगह का environment same नहीं होता, हर जगह environment change कर लेता है. Next, the changing environment. The changing environment, the environment has always been changing on the surface of the earth because of the change in the element of environment. These changes occur both slowly as well as suddenly. कई environment से changes आती हैं और the elements के कारण और ये elements slow and suddenly change होते हैं. The slow change occur through degradation process of the earth, that is through the erosional agent, lake, river, glacier, wind, ocean, weathering, etc. In the slow change degradation process of the earth के कारण ਦਾ जिहड़ी साडी global warming ਹੁੰਦੀ है, glaciers पिघलते हैं, ocean ਦੇ ਵਿੱਚ change आती, weather ਚ change आती और sudden change or the abrupt change to the upheaval result in folding and faulting of the earth's surface. Similarly, the earth has been changed from gases to molten state. After cooling it has changed into solid form. This change occur very slowly. In the sudden change जिवें कि earthquake आ गया, rainfall, ये साडी earth ते sudden change लैके आउंदे हैं, इहदे कारण साडी जिहड़ी अर्थ आ चेंज हो जाती है गैसिस टू मॉल्टन स्टेट. ये एग्जाम्पल है वॉल्केनो. जिवें साडी अर्थ के नीचे गैसिस इकट्ठे होंगे और ये वॉल्केनो एक लावा के रूप में बाहर निकलती हैं. आफ्टर ये कारण फिर साडी अर्थ हौली हौली ठंडी होकर सॉलिड फॉर्म आ जाती है. दिस चेंज अकर वेरी स्लोली. Human beings have also brought a big change on the surface of the earth by cutting trees and developing it for its own needs such as cities etc. कहते ह्यूमन बीइंग ने environment change लैके आंदी है अपनी needs के according. उन्हें cities की development की है, trees काट करके ते industries की development की by wanting the river and digging the canal better. Water is being utilized for irrigation purpose. In this way, the desert have been changed into green land. कहते ह्यूमन इरीगेशन पर्पस के वास्ते वाटर ਨੂੰ यूज किया है कैनाल्स से और रिवर्स से. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਬਾय डूइंग सो इकोलॉजी of the place has been changed altogether. Now the Thar desert of India is no more dry barren land. Same level of the change happen on the other river valley of the world like in Indus Valley, Nile Valley, Huang Valley, so on. ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਆ ਡਰਾਈ ਬੈਰਨ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ. ਐਂਡ ਸਮ ਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ वर्ल्ड लैवल पे नाइल वैली, हुआंगी वैली, इंडस वैली भी देखने को मिलती है. नेक्स्ट, द मेजर स्फीयर ऑफ द एनवायरनमेंट, द इंपॉर्टेंट स्फीयर्स एटमोसफेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और इन्होंने स्फीयर्स ने साडी बायोस्फीयर फॉर्म होता है जिससे साडी लाइफ एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट, एटमोसफेयर इन डिटेल. द एटमोसफेयर इज इनक्लोज सराउंडिंग by air and this airy cover is called atmosphere. साढ़े अर्थ अराउंड जिन्ना भी airy cover है उन्हें कहते हैं atmosphere. Every planet except Mercury and satellite of the solar system are enclosed by the cover of air. Although this air cover extend up to 1600 km around the earth, still 99% of the air is up to 32 km height only. इन्हें साढ़े ਜਿਹੜੇ planets हैं Mercury, satellite इन्हां विच ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ 에ਅਰ ਹੈ ਔਰ ਆਲ ਤੋਂ 1600 에ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ अर्थ ਤੇ और 99% एयर है 32 किलोमीटर हाइट पे. ऑन द अर्थ सरफेस एयर, लैंड एंड वाटर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड अर्थ सरफेस ते ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ एयर है, लैंड एंड वाटर है, तिन्ने कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल आ प्लांट्स एंड एनिमल्स की लाइफ की मेंटेनेंस. नेक्स्ट, लिथोस्फीयर. The surface of the earth is covered both by water and land. Water covers about 71% and land covers about 29% of the earth's surface. The third of the total land area lies in the northern hemisphere. The earth has serious thickness is approximately 80 to 100 km. This solid thickness of the earth persists
इट्स नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल जिन्हें अमेरिका में सी एरिया ज़्यादा और लैंड एरिया घट है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज इंटीरियर कंसिस्ट ऑफ 3 shells, lithosphere, mantle and the core. The uppermost layer of the shell is called CL. CL where S stand for silicon and aluminum is called Cl, where Si stand for silicon and Al for aluminum, that is why it's called Cl. The second layer is called Sigma. It consists of silicon and magnesium, where Si for silicon and Mn for magnesium. The third and the innermost layer of the earth is called Ni, which consists of nickel and ferrous, Ni for nickel or Fe for ferrous, etc. Next, hydrosphere. The water covered region on the surface of the earth is called hydrosphere. Covers vast area in the form of ocean, bays, gulfs and seas. The earth's surface is जितना भी water area का oceans, on bays, gulfs and seas, तो सारे लोग hydrosphere कहते हैं. The earth is called watery planet because 71% of the earth is covered with water. There are water bodies, 5 oceans, numerous seas, rivers and lakes on the earth. Next, biosphere. The sphere on the earth where collective effect of physical elements may be seen. The maximum is known as biosphere. This sphere is the result of interaction of 3 spheres: hydrosphere, lithosphere and atmosphere. इधर जेड़ा साडा biosphere है तीनों sphere दे नाल ही बनया है: hydrosphere, lithosphere and atmosphere. Next, the human environment. The present landscape of the earth is not only due to the natural forces of the earth but also due to the man's thought. With the technological development, man has made changes in the physical environment according to his need. In the earth जिन्नी भी changes है उस पर natural forces के कारण नहीं है, क्योंकि man ने technical development लेके आती है उसके कारण है, वो अपनी needs को fulfill करने. Man has passed through 4 stages of its development. It means the primary man was involved in hunting practice only. After it started animal rearing, then got into agriculture and mining practices. Nowadays, man has involved itself into industry and practice. Present man है उन्हें अपने आप को आजकल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री और अदर प्रैक्टिस में ही कर लिया बिकॉज ऑफ कटिंग द ट्रीज. पहला जो मैन से फोर स्टेज के जिम्मे प्राइमरी मैन से हंटिंग प्रैक्टिस करता सी और एनिमल की रेयरिंग करता ही अपने प्रॉफिट पर्पस एग्रीकल्चर करते, पर कहते अज जो मैन उन्हें अपने इंडस्ट्री डिवेलपमेंट पर्पस भी यूज कर लिया. नेक्स्ट, by clearing the dense equatorial type of forest, man has planted rubber producing tree. With the development of means of transport, agriculture and product like potato, maize, cotton, sugarcane, tea, coffee are being cultivated and traded even to far off the areas. कहते present man ने forest की cutting करके planted करते हैं rubber plant जिन्हें कि means of transport वास्ते and agriculture product like potato, maize, cotton, sugarcane, tea, coffee are being cultivated for traded far off areas. Now the world is known as global market. यदि कारण साडा world है global market बन गया. It means if the production of any item is planned at one place, the consumer make market can be made established at the place easily. कहते अगर जिथे जगह ते प्रोडक्ट की जी डिमांड है ज़्यादा होगी असं उत्थे आसानी नाल ही नेक्स्ट जो प्रोडक्ट भी एस्टैबलिश कर सकते हैं. सिमिलरली विद द इंपोर्ट ऑफ गुड सीड एंड ब्रीड इंप्रूवमेंट हैव बीन मेड इन क्वांटिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स. इस तरह ही असीं जिहड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं सीड्स ताकि साडे जिहड़ा कंट्री उत्थे सीड जिहड़ी फूड की प्रोडक्शन वधिया हो सके क्वालिटी वाइज. Man has made tunnel across the mountain, shipping through man-made canals, namely Panama and Suez, diverting the river water for irrigation purpose, exploiting the minerals, and establish the industrial center are examples which show that to some extent, man has controlled the natural forces of the earth according to his own requirement. कहते man ने अपनी requirement के वास्ते shipping, mounting, canal जो वाटर है इरीगेशन पर्पस वास्ते डिवर्ट कर लिया और उन्हें इंडस्ट्री एस्टैबलिश कर लिया कि अपनी नीड्स से फुलफिल करने वास्ते नेचुरल फोर्सेस ने कंट्रोल कर लिया. सच अटैम्प्ट हैव मेड द वर्ल्ड ग्लोबल विलेज. इसी सारी जी है फॉर्म ने सानू वर्ल्ड में ग्लोबल विलेज विच फॉर्म कर लिया. इट मीनस द मैन हैज गॉट स्किल डेवलप टू यूज रिसोर्सिस. इस तरह कहते मैन जी अपनी स्किल का रिसोर्स यूज करना काफ़ी हद तक आ गया.
Thank you. It's all about our environment.